This is the journey of MIASM, बराबर है, which was started from the introduction, where we understood the how cellular biology, leads to a whole organism, whether the nucleus or the DNA structure makes the blueprint of the person, right? That's why whatever the changes that occurs at the cellular level may reflect over the whole organism or whole body, right? Now we had seen the function of the cells, right? The three basic function of the cell, which is very important to understand and correlated with the respective MIASM, where we have seen that the first and basic function of the cell is the to provide the energy, right? To provide the energy and nutrition. When this basic function gets compromised, बराबर है कि नहीं, तभी क्या होता है, cell has to sacrifice that basic function, leads to the inflammation or sora come up in the role, right? We discuss about the function, the cell function, है ना. Second function क्या है कि second function is to survive, and in order to survive there is a proliferation, there is a regeneration, there is a reproduction. मतलब survival of the species, that means the community, है कि नहीं, मैं हूं तो मेरे बच्चे, उसके बच्चे, उसके बच्चे, तो ऐसे. तो जनरेशन टू जनरेशन इंफॉर्मेशन, नॉलेज, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होते जाता है. सो बट व्हेन दिस सेकंड डिफेंस or function is get compromised or sacrificed, when the first defense is not useful to eliminate the hostile agent, right? बराबर है. These are the defense system. When the inflammation is sufficient to remove or to eliminate the hostile substance in the form, whether it is toxin, whether it is a bacteria, virus, parasite, or even the at the mental level, बराबर है. So second gear change करने की जरूरत नहीं पड़ती सेल को. When the cell gets changed their second gear, when the primary function or primary defense is not working up to mark, or it is not working in order to remove the hostile agent. Now the अभी सेकंड इसमें क्या हो रहा है, प्रोलिफरेशन हो रहा है, थिकनिंग हो रहा है, पॉलीफॉर्म हो रहा है, ट्यूमर्स हो रहा है. एंड इवन आफ्टर this constructive morphology, the things is not going to correct, things gets out of control, the body has to sacrifice his or her parts by losing it. Body has to sacrifice, and here the comes the third role or third function of the cell, that is the immunity, where body has to destroy their own parts to survive or to save the whole organism or whole body. It is not it is not like, it is in order to survive the other parts of the body or the whole organism. उसको अपने एक पार्ट की बलि देना पड़ता है, बिकॉज जो डिफेंस उसके पास है, जो लोअर डिफेंस है या अदर डिफेंस है या प्राइमरी डिफेंस है, फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजिकल डिफेंस, देन कंस्ट्रक्टिव मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस, ये काम नहीं हो रहा है इनसे, तो बॉडी को हायर डिफेंस यूज करना पड़ता है. दैट इज कॉल्ड एज द सिफिलिस, which is we called it as the most dangerous and the destructive defense, that means destructive MIASM, है कि नहीं. Though we are in a position to treat the sora very well, because it is the inflammation and functional changes, functional biochemistry is only the involved. That's why with small time, with we can treat the such a kind of disease very well,
means large amount of the homeopath or every homeopath can able to treat such a kind of disease. But when comes the psychotic, then the question comes. And even few psychotic diseases or most of the psychotic diseases can be treated if the proper simulacrum is prescribed. But the problem is with the syphilitic, which is the destructive. Why the problem is, or it is difficult to treat the syphilis, because it is a fast growing. There is a fast growing pathology in the syphilis. In contrast, if you see the psychosis is the slow growing pathological changes that occurs. So we have the ample amount of time. But at the same time, the psychosis is deceitful or deceive. Deceive in the sense might be the pathology is growing inside or we don't know. बराबर है कि नहीं? Because it has the less dynamization, less dynamic. Sora has the high dynamic. Even syphilis has the high dynamic because destruction हमको दिखता है और reflect होता है at the level of mind, at the level of body. So it is by studying. If you study the MIASM properly, you can understand that कि so साइकोसिस को ट्रीट करने से ज्यादा इजी सिफिलिस को ट्रीट करना होता है. And the syphilis we can treat easily than the psychosis. बराबर है कि नहीं? So if we go through the proper channel or proper his similable, all right. So pathogenesis of the syphilis. When a cell cannot cope up with the invading organism, pathogens or toxin by using physiological defense or constructive defense, morphological defense, it decide in despair. है ना, बॉडी को कोई खुशी नहीं है कि उसके पार्ट को डिस्ट्रॉय करना. It decide in the despair to adopt a do or die attitude. अगर बॉडी को, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया था ना अजय देवगन का जो मूवी आया था RR RRR वाला, जहां पे अजय देवगन अपने गांव वालों को, अपने फैमिली को बचाने के लिए खुद की बलि देता है. बराबर है कि नहीं? सो इन ऑर्डर टू सेव द होल फैमिली, द अदर पार्ट ऑफ द ऑर्गन, अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम, मतलब जिंदा रहना है तो डू एंड डाई तो भिड़ जाएगा, तो डू एंड डाई का सिचुएशन आएगा. So in despair, it is not the happily that the body destroy his own parts. It is the in a state of despair. Of the trillion cells, every cell, as the textbook of pathology teaches, lives and works to maintain biological equilibrium inside the human being. If your body is healthy, that means what it means? It means every cell in your body working harmoniously and working in a homeostatic way. Homeostasis. Homeostasis is important. So every cell is in the homeostasis, or working diligently or working harmoniously. Every cell is in the equilibrium. When the few cells or tissue destroy or impair their equilibrium, impair their harmony, then the whole organism has to suffer. So whatever the नियम जो एक सेल को लागू हो रहा है वो पूरे सेल के लिए और पूरे बॉडी के लिए, पूरे सिस्टम के लागू हो रहा है. As long as this equilibrium is maintained, health is prevail. When the homeostasis is disturbed, it results in a disease or even it results into the death of the person. So if the harmony is responsible for the health of the person, the disturbed harmony loses the control over health. That means impaired the health. That is, we can call it the disease. Disease means this is जो होता है, that means the comfort जो होता है, जो harmony होता है, इसमें disturbance आ गया है. जो equilibrium है, जो homeostasis है, उसमें disturbance आ गया. That is, we can call it as a disease. This means every cell concerned for the whole being. Means one cell reflect the whole organism or every cell. It is generally a selfless service of the part of the whole body. When the whole being is under attack,
when the whole is under attack, मतलब पूरा body under attack है, it may decide to sacrifice itself to save the whole. जब पूरे body या पूरा गांव अगर अंडर अटैक ऑफ डकैती और रॉबर्स और मर्डरर है ना, डाकू, सो समवन मतलब सेल डिसाइड करेगा कि कौन सा डिफेंस उसको यूज करना है. पहले तो सेल क्या डिफेंस, मतलब गांव वाले क्या डिफेंस यूज करेंगे, पहले जो भी उनके पास इंस्ट्रूमेंट है, जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं, तलवार भाले है ना, वो उसको यूज करेंगे, लड़ेंगे, सब लोग लड़ेंगे. पर जहां पे दिख रहा है कि ये लड़ना उनपे मतलब हम उनपे भारी नहीं हो पा रहे, वो मतलब वो डाकू लोग या मर्डरर जो भी है वो हम पे भारी हो रहे हैं, हम उनका सामना नहीं कर पा रहे. सो द न्यूक्लियस मतलब जो मेन उनका जो पर्सन है वो क्या करेगा, दे सेव देयर होल कम्युनिटी बाय, उनको ऑर्डर देंगे, उनको आदेश देंगे तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इनका सामना करूंगा. few sales or few soldiers or few person out of whole community fight against the enemy, and they destroy or they devote their life in the betterment of the whole community. I mean the same rule, this is for the understanding, better understanding. यहाँ पे भी वैसे ही है कि पूरे शरीर को अगर बचाना है तो किसी को तो भी अपना sacrifice करना पड़ेगा. So the पहले देखते हैं बॉडी द लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन, बराबर है, लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन को छोड़ देते हैं कि ओके यू कैन डिस्ट्रॉय इन ऑर्डर टू सेव द अदर. राइट नाउ द डिजनरेशन और डिस्ट्रक्शन इज बाय द टू मीन्स. तो जो भी सैक्रिफाइस होता है, ये डिस्ट्रक्शन होने के लिए सिफिलिस प्रीडोमिनेंट है, तो डिस्ट्रक्शन होना है पार्ट ऑफ द होल बॉडी. तो ये कैसे होता है, टू मीन्स. डिस्ट्रक्शन इज बाय द नेक्रोसिस, or in another way it is by apoptosis or apolysis. Now what is the necrosis? It is important to understand what is the necrosis. This is the process by which the body discards the deceased part that can be dangerous to the body in future. This is brought by the process called as the karyolysis. Karyolysis is the process where the nucleus of the necrosed cells is get destroyed. मतलब पूरा डिस्ट्रक्शन होता है सेल का, बराबर. इट इज अ इरिवर्सिबल चेंजेस वी कैन कॉल पैथोलॉजिकली इफ यू कंसीडर, बराबर है. इट इज द प्रोसेस वेयर द बॉडी डिसीज पार्ट हैज टू बी डिस्कार्ड, है ना, वेयर उसको लग रहा है कि ये अभी डेंजरस है हमारे लिए, बाकी पार्ट्स के लिए डेंजरस है, तो उसको पार्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है. Now the disease symptoms encountered in the syphilis necrosis. This is very important. Try to understand. If you understand the things general, then you can apply it at the particular level. You can apply it at the particular disease. Each and every disease you can apply. Just don't mug up or don't see ready-made. Don't collect the ready-made literature. That's there are the literature where it describe that ki this disease comes under this disease comes under this. There are the books on the MIASM where the diabetes comes under psychosis, hypertension comes under the psychosis, brain tumor comes under the psychosis, बराबर है. ये है तो गैंग्रीन है तो सिफिलिस. If you follow that, you are not in a position to understand the basics, understand the principles, so that you can able to make the miasmatic diagnosis in each and every cases, whether it is physical level or whether it is a mental level. So expression कैसे रहेंगे syphilitic necrosis का? One is the disfigurement. Disfigurement मतलब उसका पूरा शेप ही पूरा चेंज होगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा. डिस्टॉर्शन अगेन इज द वन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द सिफिलिस. गैंग्रीन, गैंग्रीन टोटल destruction of the cell, putrefaction of the cell, ulceration, laceration, bleeding which is profuse in nature, sensitivity which is out of all proportion, sensitivity
which is out of all proportion. Deep bleeding cracks, bleeding, distorted ulcer with bleeding, and distorted wound. You can see the distorted wound here, distorted, you can wound, you can say ulcer. All this comes under the syphilis. All these comes under the syphilis. Now you can understand by this terminology which is comes under the syphilis, we come to the certain images. See the images where you get the distortion, disfigurement, blackening of the parts where the whole blood supply is getting cut off. There is no nutrition, there is no survival, and there is a death of the tissue, there is a death of the parts. This is called gangrene, putrefaction. There is a deep cracks, there is a lacerated wound, distorted edges. बराबर है कि नहीं? So all these are comes under the syphilis. This is, try to understand this. हमने सोरिक फेज भी देखा है, हमने साइकोटिक फेज भी देखा है, अभी हम सिफिलिटिक के तरफ जा रहे हैं. हम सिफिलिटिक को समझ रहे हैं. एक माइजम समझने से नहीं होगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल थ्री माइजम. बराबर है कि नहीं? देयर इज नो फोर्थ माइजम. ये हो सकता है कि सोरा सिफिलिस हो सकता है, दैट वी कैन कॉल इट एज, है ना, called it as a tubercular. अगर आप tubercular माइजम भी बोलेंगे नो प्रॉब्लम, बट इट इज अ बेसिकली अ सोरा सिफिलिस. सोरा साइकोसिस भी होता है, साइकोसिफिलिटिक भी होता है, और फ्रैंक सिफिलिस ऐसा. नाउ दिस इज नेक्रोसिस हमने देखा. अभी एपोलाइसिस और एपोप्टोसिस. एपोप्टोसिस का मतलब है प्रोग्राम सेल डेथ. प्रोग्राम सेल डेथ, इट इज लाइक अ सुसाइडल. यहाँ कोई बाहर का व्यक्ति नहीं ये कर रहा है. This is a process. Different parts of the body undergo the program destruction of the self. और प्रोग्राम कौन बनाता है? न्यूक्लियस ऑफ द सेल, है ना. तो प्रोग्राम सेल डेथ करना है, who decide the nucleus of the cell, that means DNA structure, the genetic material, the genome. Now the disease which have encountered in the syphilis as a apolysis or apoptosis means self destruction. कौन से diseases है that comes under the self destruction, where the body parts or body cell destroy their own cell? The most important example is the autoimmune diseases. The autoimmune itself suggests कि autoimmune, that the immune cells destroy the own cells. बराबर है कि नहीं? Immune cells destroy their own cells. This is against the immunity. The works against the immunity. Our own डिफेंस वर्क अगेंस्ट और ओन. मतलब ये है कि हमारे सोल्जर खुद हमारे सोल्जर को मार रहे. दिस इज वेरी डेंजरस. इट इज लाइक अ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लाइक अ सोरियासिस, लाइक अ लाइकेन प्लानस, राइट, in pemphigus. All these are comes under this autoimmune disease. Even the motor neuron disease. Here, the gun of destruction is pointed towards the self. This is called apolysis or apoptosis, which comes under the frank syphilis. Now, if you see the constitution which have the tendency to destroy self, बराबर है, जो self destroy के तरफ जा रहा है, the constitution, their cell has the tendency to destroy their own cell, will suffer in long term from the autoimmune disease. Or the even you can connect it the third process which tends to pointing towards themselves. The thought process, I am reflecting it over the mind. Those thought process which pointing towards the self, not to, like blaming others. That means pointing to others, but blaming self, reproaching self. It is pointing towards the self. That every mistake or small mistake or even कुछ भी mistake नहीं हो, that person pointing towards self कि मेरी गलती है, मेरे वजह से ही हुआ है, I am the culprit, I am the culprit, मुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है. The patient goes into the conscience, goes into the guilt easily.
and turns to be a suicidal thought, suicidal tendency, suicidal attempt. So this is the self destruction that is called autoimmune. Barabar, the constitution we have the tendency to destroy self will suffer in long run from the autoimmune diseases, and those that are violent not on self but on the outer side will suffer from other destructive diseases. ऐसे भी कॉन्स्टिट्यूशन है जो वायलेंट है, जो सेल्फ पे वायलेंट नहीं है बट ऑन द अदर पीपल्स, ऑन द अदर कम्युनिटी will also suffer from the destructive disease like a self destructive disease. The remedies for the self destructive disease are the aurum, and ये self destruction के लिए जो है aurum है, but and other remedies are also because it has a strong suicidal tendency, that's why it comes first. Another remedy where there is a self-destruction but leads to external destruction. External destruction more हो रहा है, physical destruction more हो रहा है. That remedy is the fluoric acid. बराबर है? That remedy is the fluoric acid, and there are the other remedy like Merck's. There are the remedies like the Mercor, Mercite, Flevo, Rubber. So you get the examples in the nose. The caries of nasal cartilage carries destruction. Just it is not the just inflammation. Caries of nasal cartilage, lot of ulcer or deep ulcer in the mouth, stomach, duodenum are all examples of the syphilitic miasm. Acute or chronic renal failure, infection in the heart, lung fibrosis, cancer, cancerous ulcer, cancerous growth, gangrene, Parkinson's disease, cerebral palsy, all these are the example which comes under the syphilitic miasm. This is example which comes under the syphilitic miasm. Now come to the syphilitic structure, physical body or physical structure. जैसे हमने देखा था ना कि सोरिक कैसे रहता है ना, अट्रैक्टिव और चार्मिंग, ऐसे लगता है कि इट्स अ सोरिक फेस कैसा रहता है ना, नॉर्मल, हम बोल सकते हैं उसको नॉर्मल, नॉर्मल शेप, नोज, लिप्स, ऑल दीज आर नॉर्मल. अगर कुछ बड़े लिप्स है, छोटे लिप्स है, एकदम मतलब जितना नॉर्मल लिप्स होना चाहिए उससे भी छोटे लिप्स हो सकते हैं, रहते हैं, है ना. नॉर्मल, द साइज ऑफ द लिप्स इज लार्ज और साइज ऑफ लेस देन द नॉर्मल. बराबर, तो साइकोसिस लेस, साइकोसिस एक्सेस. बराबर है ये. तो द फेस इज मोर ऑफ ओवल शेप और लीड्स टू फैटी डिपोजिशन, जिसमें लगता है कि मोटा फेस है ना. ऐसे पॉइंटेड नहीं रहेगा, जैसे पॉइंटेड चिन नहीं रहेगा, इट इज पॉइंटेड चिन एज सीन इन द सोरा. बराबर है कि नहीं. तो ओबेसिटी, ओबेस फेस बोलो या थोड़ा फैटी फैटी डिपोजिशन ज्यादा दिखेगा इसमें साइकोसिस फेस में. नाउ हियर द सिफिलिटिक फेस इज दैट which repels you, which repels someone. जहां पे देख के ही ऐसे डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, जैसे बच्चे भी डर जाए, बच्चे डर जाएंगे, पर हम भी जैसे एल्डर गेट्स द रिपेल्स थॉट, ये क्या है. बराबर है. इट्स नॉट नॉर्मल, है ना. इट्स नॉट अ नॉर्मल, इट इज द disfiguring like, it is a distortion or the disfiguring like something that just not normal. It may be look like ugly, it may be distorted fade, or it may be repulsive. The nose and eyes can be extra sharp like a dagger, extra sharp, pointed, है ना. So this lady is not a syphilitic expression. The boy, the man having the syphilitic face, but the repulsive, है ना, जैसे repulsive action जो होती है, that denotes that denoted by the lady. Repulsive, अरे एकदम से, है ना, ऐसा लगता है कि कुछ देखने के बाद कैसे एकदम नौशिया या उल्टी जैसे हो जाएंगे, एकदम बाप रे ऐसा करेंगे, है ना. या कुछ फेशियल एक्सप्रेस, फेस स्ट्रक्चर रहता है, बच्चे टेरिफाइड मतलब घबरा जाते हैं. सो such a kind of things are comes under the syphilitic physical structure, right. Now अभी syphilitic constitution कैसा रहेगा. Individual born with a predominant syphilitic constitution have an innate and predominant tendency to fight all the invasion, whether they are pathogen, toxin, or on the mental level, the emotions by destructive defense response of the cells and tissue.
मतलब the person or the boy, the child who born with the predominant syphilitic constitution, this is very important. हमने दोनों देखा है, द चाइल्ड बॉर्न विद द सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन, चाइल्ड बॉर्न विद द साइकोटिक कॉन्स्टिट्यूशन. जहां पे मैंने एग्जांपल दिया था, बच्चे का एग्जांपल दिया था, पेरेंट्स जो अभी मॉडर्न एज में जो पेरेंट्स होते हैं उनका एग्जांपल दिया था, जहां पे वो जॉब करते हैं और बच्चा कैसे सफर होता है. नाउ हियर the parents are syphilitic. Now this person or the child is born with predominant syphilitic constitution. अभी predominant syphilitic constitution से born हुआ, that doesn't means they not reflect the inflammation or never reflect the inflammation or never shows the stage of inflammation. Though it is the predominant syphilitic, but other MIASM is there, but in the passive form. But it is not in the predominant form. Might be there is an inflammation followed by the destructive syphilitic expression of the disease. Try to understand. Means there is a inflammation, there is a rashes, there is a bronchitis, there is a rhinitis, but followed by immediate followed by there is a fast process followed by destructive process where you can say it is a person goes or that child goes into the syphilitic MIASM. Right? We have the example. I will explain you later on in the later slide. So ऐसा जहां पे वो कैसे डिफेंस यूज करता है, डिस्ट्रक्टिव डिफेंस यूज करता है. These people or these childs are bound to get easy destruction, easy hemorrhage. All destructive जो ये है ना सिम्टोमेटोलॉजी या एक्सप्रेशन, वो सब दिखेंगे इसमें. ओवरवेलमिंग इन्फेक्शन है ना, इजी इन्फेक्शन और एकदम सीवियर हो जाता है इन्फेक्शन. मतलब अभी तो सर्दी थी और 2-3 दिन में एकदम से निमोनिया और एकदम से आईसीयू में एडमिट करना पड़ा. दिस इज द थिंग. If the boy having the or child having the predominant syphilitic ये predominant syphilitic character, then कैसा होगा कि सर्दी से शुरू होगा, सोरा से शुरू होगा, इन्फ्लेमेशन से शुरू होगा, but directly then shift to the destructive pathology. Here सोरा jump to the syphilis. That doesn't means कि ऐसा नहीं है कि सोरा के बाद साइकोसिस ही आएगा हमेशा. सोरा में jump to the syphilis, the disease has the fast pace. और जहां पे ऐसा फास्ट पेस होता है तो हमको रेमेडी भी वैसे फास्ट ग्रोविंग या फास्ट डिस्ट्रक्टिव, जहां पे पेस जो है उसका ड्यूरेशन फास्ट होता है. देयर आर द रेमेडी विच आर स्लो एक्टिंग, स्लो ग्रोविंग, स्लोली द पैथोलॉजी बढ़ती है, स्लो स्लो स्लो. देयर आर द रेमेडी वेयर द इन्फ्लेमेशन डायरेक्टली लीड्स टू द अल्सरेशन. रीड द कैंथारिस. Read the Cantharis, you can understand that how the sora goes directly into the syphilis. उसमें read the Cantharis even in the synoptic की से पढ़िए, उसमें दिया है, या बोरिक से पढ़िए, इवन कोई भी बुक से पढ़िए. तो जो पैथोलॉजी उसमें डिस्क्राइब किया, you can understand how the inflammation easily goes into the ulceration, destruction, scalding, bleeding, hemorrhage, like that. So these peoples, this type of peoples are bound to get this easy destruction, easy overwhelming infection, easy septicemia, excruciating pain, excruciating pain. ये that doesn't means कि ये कैंसर का पेन है, but the pain type, though the underlying pathology is not a destructive, but the type of pain is the excruciating. So excruciating, it causes the maddening. जैसे for example maddening headache we बोलते हैं ना migraine में. Migraine headache is so terrible and severe. So terrible and severe. Hypersensitiveness. बराबर, terrible and severe pain that we can call is the patient goes into the mania due to the pain. This is the syphilitic expression. Or maddening headache or maddening pain. This is the syphilitic expression. Cracks and deep ulcers that bleed easily. Here we are discussing here the physical diseases. Patient get the primary inflammation and go to the destructive pathology easily. This I try to understand this how the syphilis goes. Syphilis अगर बच्चे हैं तो डायरेक्टली सिफिलिस एकदम नहीं दिखेगा, उसमें प्राइमरी इन्फ्लेमेशन होगा, बट दे वेरी फास्ट उनका पैथोलॉजी प्रोग्रेस होगा इनटू द सिफिलिस.
फॉर एग्जाम्पल द कोविड। अभी कोविड में किसी को ब्रोंकाइटिस भी हुआ है, किसी को निमोनिया हुआ है, दे रिकवर। बेसिक निमोनिया निमोनिया हुआ है, बराबर है कि नहीं? देर आर द स्टेजेस, एंड सम पीपल्स विद दिस फीवर, विथ वन डे फीवर, वन डे कफ, डायरेक्टली देन सेकंड डे थर्ड डे एकदम आईसीयू में एडमिट करना पड़ा, बराबर है? कुछ लोग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ डेवलप किया तीसरे दिन चौथे दिन, और एकदम पता चला कि डी डायमर एकदम से बढ़ गया है, क्लॉटिंग क्लॉट्स, ब्लड क्लॉट्स हो रहा है, हाइपोक्सिया हो रहा है, ऑक्सीजनेशन ऑक्सीजन नहीं हो रहा है, सेल ऑक्सीजनेट नहीं हो रहा है, दे टर्न्स टू अ सिफिलिटिक। इट डिपेंड्स ऑन द इनेट इनेट कौन सा ये है, वो अगर सिफिलिटिक प्रीडोमिनेंस है या साइकोटिक प्रीडोमिनेंस है या सोरिक प्रीडोमिनेंस है, ऑल द एक्सप्रेशन ऑफ द डिसीज और पैथोलॉजी कैसे प्रोग्रेस होंगे, इट डिपेंड्स ऑन दिस, कि सेल कैसे गियर चेंज करता है। अभी सेल कैसे गियर चेंज, हु डिसाइड? द न्यूक्लियस इज डिसाइड, द डीएनए इज डिसाइड, द इनेट कैरेक्टरिस्टिक इज डिसाइड, बराबर है कि नहीं? कि गियर कौन सा चेंज करना है, सोरा से एकदम सिफिलिस की तरफ लेके जाना है, मतलब फर्स्ट गियर से हम एकदम फोर्थ गियर डालना है, फिफ्थ गियर डालना है, या सेकंड गियर डालना है, दे ऑल आर डिसाइडेड बाय दैट न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सो इन केस ऑफ द कोविड में आपने देखा होगा कि यू कैन इजीली यू गेट द सोरा टू सिफिलिस पिक्चर। There are the one case mentioned by professor in the book, the 4 years 4 to 5 years child who suffered with the blindness, blind है ना, कुछ भी नहीं देख पा रही, 5 years child who is suffer with the blindness, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया है कि अब ये कभी देख नहीं पाएंगी, ब्लाइंड हो गई, there is no vision at all, so there is a no vision at all. Now when she comes to a homeopath, when she comes to a professor, they took the proper history, and it is realized that the complaint start before first year of age. May there was a rashes which was suppressed by the allopathic mode of treatment, and there was a history of vaccination at the third year, third years of the age, third year of age, right? Now what the allopath diagnosed it as a blindness by birth, yeah, ये birth से ही है, but on inquiry towards the mother said कि the child was respond to the stimulus, to the talking, to the voice up till the 3 years of age. And sir has emphasized there कि more than what the allopath decide and diagnose, try to understand the mother's feeling or try to understand the mother's observation, कि मदर का ऑब्जर्वेशन क्या है, कि मेरी बच्ची तो 2 साल तक 3 साल तक अच्छी थी, जब बात करते थे इधर देखती थी उधर देखती थी, बराबर है कि नहीं, रिस्पॉन्ड करती थी, अभी अभी बात भी नहीं कर रही, रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रही, 5 साल की हो गई, कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, एकदम लिथार्जिक है, तो ये 3 साल के बाद से ऐसे क्या हो गया? ट्राई टू सी नाउ, अभी कैसे बच्चे का रिएक्शन। सो नाउ दिस वैक्सीनेशन where the allopath never take it as a causative factor for the dangerous disease, but as a homeopath we understood that the vaccination can be the culprit to produce the different even the syphilitic diseases. Now you can see the different article which focuses on कि ये कोविड वैक्सीन दिया तो now the peoples are more prone for the cardiac arrest, more prone for the atherosclerosis, more prone for the clots, and there is a chances of sudden death. And this is actually we can see in the community, in the society, that कि कोई पर्सन जो जिंदगी भर कभी बीमार नहीं हुआ, सर्दी खांसी कभी हॉस्पिटल में नहीं गया, कभी एडमिट नहीं हुआ, पता चला है कि सडन डेथ हो गई इसकी,
So all these the maybe the mostly the culprit because of the vaccination. Now, as a homeopath, as a clever homeopath, as a clever doctor, this is our duty to understand how the disease progress, how the disease start. So we have to consider the vaccination as the culprit to trigger the disease condition and leads to a blindness. Now, blindness is the retina is affected. Now, see, from ectoderm, where the skin is affected, where there was an inflammatory process was there, which gets suppressed, and without the endoderm or mesoderm phase, मतलब ये एरिया या रीजन या ऑर्गन अफेक्ट होने नहीं हुए, डायरेक्टली रिफ्लेक्ट द और डायरेक्टली द body produce the blindness. That means affection of the retina. That is called as a neuroectoderm. Means ectoderm to neuroderm एकदम jump हुआ, बराबर है कि नहीं? सोरा टू डायरेक्ट सिफिलिस जंप हुआ, ब्लाइंडनेस, बराबर. तो रेटिना, सिलियरी बॉडी, all comes from, all develop from the embryologically. It is very important to understand. So embryologically, if you see the ciliary body, the retina, all come up from the neuroepithelium or neuroectoderm, बराबर है कि? So ectoderm से endoderm, mesoderm, connective tissue and the neuroectoderm, ये कैसे organ कैसे develop हुआ है? That is again, this gives rise to the कैसे separation हो रहा है करके, है ना? So this book is also very important, theory of separation. So that child goes into the blindness. So we have to consider this vaccination in into the totality, बराबर है. अभी उसका डिफायंट, फाइटिंग, डिस्ट्रक्टिव नेचर भी था बच्चे का, चिली था, है ना, उसकी सेंसिटिविटी, एंड कंसिडरिंग द वैक्सीनेशन एज अ ट्रिगरिंग फैक्टर, द सर हैज प्रिस्क्राइब द रेमेडी. डेफिएंट में कौन सा है? डिसोबीडियंस और डेफिएंट. डिसोबीडियंस, डिस्ट्रक्टिव, द मर्सोल वाज प्रिस्क्राइब्ड, राइट? द मर्सोल वाज प्रिस्क्राइब्ड. नाउ हियर, जब ये फेज जो होता है ना, सोरा टू सिफिलिस डायरेक्ट जब जाता है, तो यू डोंट हैव टू सिलेक्ट द रेमेडी विच हैज द स्लो प्रोग्रेस. स्लो प्रोग्रेस रेमेडी जैसे कलकेरिया, थूजा, ऐसे रेमेडी आप प्रिस्क्राइब करेंगे जिसका स्पीड स्लो है. दैट्स व्हाई पेस ऑफ द डिसीज और pace of the remedy and pace of the disease to understand in the simillimum while selecting the remedy is very important. जैसे लास्ट टाइम एक एक्यूट केस लिया तो ब्रायनिया जेल्सी में हम सिलेक्ट किया था, तो कैसे ये पेस कैसा था उसके ऊपर, उस वो केस, एक्यूट केस, मुझे वही रिफ्लेक्ट करना था, आपको समझाना था कि पेस ऑफ द डिसीज, हाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट द रेमेडी. इफ द पेस ऑफ द सिम्टम इज फास्ट, सब कुछ हो गया अभी, और आप ऐसी रेमेडी दे रहे हो जिसका पेस स्लो है, स्लो सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, जैसे जेल्सिमियम एंड ब्रायनिया, इट विल नॉट एक्ट. You have to understand, or you have to select that remedy where the pace is fast, like belladonna, cantharis, बराबर, जहाँ पे मर्क group, even मर्क or all this. So pace of the remedy, pace of the disease must be matching, बराबर है. Remember this. Distortion and disfigurement is the rule in the MIASM. Distortion, disfigurement, already we explained. So it is obvious that the SORA is more you can see in the infant and children. बराबर है कि नहीं? SORA आपको बच्चों में ज्यादा मिलेगा. It is obvious. Psychosis middle age में ज्यादा मिलेगा. बराबर है कि 20 के बाद या 30, 40, और syphilis old age में ज्यादा मिलेगा. That doesn't means कि ये इधर नहीं मिलेगा, but in general. है कि नहीं? Ambitious, more desire for money, more desire for luxurious things, ये कौन से फेज में होता है? बच्चों में होता है कि बूढ़ों में होता है? ये मिडिल एज में होता है, बराबर. जैसे ओल्ड एज होता है, जो बंदा लग्जरी कार में घूमना चाहता है, उसको रियलिटी समझ में आ जाती है कि दिस इज नॉट द एक्चुअल लाइफ, सो दे change their thought process. So mostly this psychosis mind is predominant in the middle age.
सो डिसीज कैन बी प्रोग्रेस, है ना। तो प्रोग्रेस जैसा होता है वैसे रिग्रेस भी हो सकता है ना। तो सोरा टू सिफिलिस डायरेक्ट जंप कर सकता है, सोरा साइकोसिस देन सिफिलिस ऐसे भी हो सकता है, बराबर है कि सोरा टू सिफिलिस जाके फिर देन साइकोसिस भी हो सकता है, दिस इज अगेन पॉसिबल, राइट। सो ऑल दीज आर रिलेटेड टू सिफिलिस फिजिकल। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिफिलिस मेंटल, है ना। हम बोलते हैं ना सिफिलिटिक मेंटल, सिफिलिटिक रूब्रिक, ऐसे बोलना बहुत आसान है ना, बराबर है कि नहीं। हमको समझ में आना चाहिए। अगर केस है आपका पैनिक अटैक का केस है, आपका सिजोफ्रेनिया का केस है ना, मेंटल डिसीज है, वेदर नॉट दैट ओसीडी, आई हैव एक्सप्लेन द ओसीडी केस इन वन ऑफ माय सेशन, है कि नहीं। आप देखिए उसको, सुनिए, यू आर वेरी, मतलब इट्स नॉट जो मैंने सिलेक्ट किया था जो रेमेडी, इट्स वाज नॉट माय फर्स्ट रेमेडी आई हैव सिलेक्टेड एंड पेशेंट फील्स बेटर विद दैट, है कि नहीं। when I recollect the whole things, when I understand the whole case and come to the conclusion कि ये है, this is the important part, and then it come up with the syphilitic mental state, and when it convert into the syphilitic rubric, and when it takes as a eliminating rubric and derive the remedy, and when it prescribe, then इतना strike हुआ। और इतना स्ट्राइक जब होता है, मतलब सेंटर पे आप उसको ये कर रहे हैं, बराबर है ना, आपने गोली छोड़ दी और बराबर टारगेट पे लगी, दैट मीन्स रिलीफ होना ही है। if you don't get, whether I am or whether anyone don't get the result, that doesn't means the homeopathy having some fault, that doesn't means the approach having some fault. It is not the approach, it is our understanding that it is in our fault कि हम उसको समझे नहीं है, हम होम्योपैथी को समझे नहीं है। हम अगर माइज्मेटिक अप्रोच को समझ रहे हैं तो पूरा जब समझेंगे तभी हम उसको प्रॉपरली अप्लाई कर पाएंगे, समझ गए नहीं। इफ वी आर अप्लाइंग पार्शियली देन इट इज डिफिकल्ट टू गेट द फुल रिजल्ट, देन रिजल्ट भी पार्शियल मिलेगा, बराबर है कि नहीं? ये ऑलरेडी वी हैव एक्सप्लेन, है ना। तो जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो जो डिसीज पार्ट होता है अंडर अटैक, पार्ट अंडर अटैक, इसमें इटसेल्फ पोज प्रॉब्लम फॉर द इक्विलिब्रियम। जब बॉडी को समझ रहा है कि ये पार्ट के कारण पूरे बॉडी डिस्टर्ब हो गई है, तो बॉडी उसका सेक्रीफाइस कर देती है, may itself pose the problem for the equilibrium or homeostasis or health of whole body. The organism hence sacrifice the part. Yes, is it? In the crook option, the immunosystem or immunomechanism is sacrificed and helps in destroying an unwanted parts. Right? This defense by destruction can be equated to our third miasm, that is called as the syphilis. When if the harmony is responsible for the health, the disturbed harmony causes loss of control over the health. When a part is destroyed, the balance is lost and control is lost. This out of control organism goes for further destruction or destruction. That's why we can come to the conclusion that the syphilitic miasm express itself as a out of control. तो जो भी चीज है at the physical level or at the mental level, if you get the things out of control, the behavior is out of control, the anxiety is out of control, the emotion is out of control, even the grief is out of control, the reaction of the person is out of control, then it comes under the syphilitic. ये base है. Then out of control leads to the distortion of the thought. Don't take this distortion at just the physical level, ki distortion of face, distortion of the organ, destruction of the organ. You can take it as a mental level too, or take mental level. This is more important. Distortion of the thought, distortion of the emotions, distortion of will, distortion of intellect, distortion of morals, and hence the ugly look. So you can take it as a distortion at
all level. You can take perversion at the all level. You can take the destruction at all level, even the mental level and physical level. That reflect the syphilis. So when we apply the above expression of syphilis to the mind, we get the out of control emotion. कैसे बोलेंगे आउट ऑफ कंट्रोल इमोशन है? तो इमोशन फॉर एग्जांपल इमोशंस कौन से हैं? एंगर इमोशन है, फियर इमोशन है, एंजाइटी इमोशन है. तो एंजाइटी जब आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो क्या बोलेंगे हम उसको? एंजाइटी इज आउट ऑफ कंट्रोल. दैट इज कॉल्ड एज that is called as anguish. That is called as anguish. Anxiety more predominant, that convert into the fear, and fear more severe form हो गया anguish. तो anguish comes under the syphilis. तो पेशेंट का पेशेंट एंग्विश में है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, और आप उसको एंजाइटी ले रहे हैं. तो पेशेंट का इमोशन और व्हाट एवर इट मे बी, पेशेंट का जो सफरिंग है या मेंटल स्टेट है, जो इंटेंसिटी में है, आपको रूब्रिक भी आइडेंटिफाई करना है वही इंटेंसिटी में. पेशेंट एंग्विश में है और आप ले रहे हैं एंजाइटी अबाउट हेल्थ, देन इट इज रॉन्ग. राइट. एंगर, एंगर है, हम उसको सोरा में भी लेते हैं, साइकोटिक में भी लेते हैं. राइट. अभी सोरा में कैसे एंगर इजीली गेट रिग्रेट फीलिंग होता है या शॉर्ट एंगर होता है. साइकोसिस का एंगर कैसा रहेगा? लॉन्ग लॉन्ग एंगर रहेगा, सप्रेस एंगर रहेगा. Anger remains for long time. Brooding, brooding, brooding. Anger remains for long time. Brooding and dwelling. Right? Anger with hatred feeling. But यहाँ पे anger uncontrolled है. There was yesterday the patient I have seen, new case, where the anger was out of control. कि डॉक्टर साहब जब गुस्सा आता है मैं मेरे कंट्रोल में नहीं होता हूँ. When the sense loses the control, और पेशेंट को पता नहीं कि मैं अभी किसको मारूंगा और क्या करूंगा, मैं थर्ड से मार देता हूँ, कोई मैं ये देखता नहीं है कि आगे वाला बंदा कौन है, छोटा है, बड़ा है, क्या है. दिस इज द आउट ऑफ कंट्रोल. दे लॉसेस द कंट्रोल ओवर देयर इमोशन. दिस इज कॉल्ड एज द, डोंट टेक इट एज जस्ट एंगर. द पेशेंट इज द वेरी एंग्री. इट इज अ रेज, इट इज अ वायलेंट एंगर, it is the impulsiveness, it is the impetuous. Means doing the action, whatever the action they are doing without understanding कि उसके consequences क्या होंगे. बराबर है कि नहीं? So these are the out of control anger or out of control emotion. Destruction of security, that gives rise to mania and insanity, where the person behave in a very abnormal way. So manias and insanity, where the person behave in a very abnormal way. बराबर है कि नहीं? So when you get such a kind of expression, you can convert that symptoms into the rubric in the form of mania or insanity. Right. Now the third is the distortion of the volatile mind, giving rise to the perversion. Right. Distortion of the volatile mind giving rise to the perversion. It is again, perversion is the abnormal behavior which is against the society, which is against the social norm. Now you can call it the perversion at the mental level, and even you can understand the perversion at the sexual level. Perverted mind. बरोबर है कि नहीं? अभी perverted sexual mind, how we can evaluate the person, or the male person, female person, or male person like to enjoy the sexual act with the animals. This is the perverted sex. There are a lot of examples that reflects the perversion. So normalcy नहीं है यहाँ पे. It is out of normalcy, out of a very abnormal, very strange. Even the strange जो होता है, strange जो होता है, that comes under the syphilis. And all these leads to the ugly behavior, ugliness, where we कोई देखता है तो उसको repel, disgust feeling आता है. बराबर है कि नहीं? So we apply a physical
we apply the physical quality of syphilis to the mind and we get following nature and syphilitic person. बराबर है, जैसे ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया कि ये डिस्टोर्शन है, डिस्फिगरमेंट है, डोंट टेक इट एज जस्ट एट द फिजिकल लेवल, टेक इट एज अ मेंटल लेवल. बराबर है कि नहीं? So if you even get the person who is very taciturn, very, है ना, जैसे काली बाय में होता है, वेरी रिजर्व, वेरी taciturn, है ना, sticking to something, you even get the physical symptoms, you even get the discharges which is very sticky and tenacious. बराबर है कि नहीं? So mind and body is going parallel. When the expression of person is not balanced and out of control, this may the expression मतलब बोलना है जो the way he is talking is not balanced, it is out of control. That means होता है ना किसी का स्पीच इतना हास्टी और हरीड होता है कि हम तो समझता ही नहीं है कि वो क्या बात कर रहा है करके, हमको बोलना पड़ता है धीरे से बात करो. नॉर्मल कम्युनिकेशन में भी द स्पीच इज सो हास्टी एंड हरीड. दिस इज द syphilitic expression. This is a syphilitic expression. The action and gestures are even not a smooth and balanced and not a control. That means it leads to jerkiness of the speech and jerkiness of the action. So jerkiness of the action and jerkiness of the speech again comes under this syphilitic expression. Now will, जैसे हमने साइकोसिस में भी देखा था कि साइकोटिक विल कैसे रहती है, साइकोटिक इंटेलेक्ट कैसा रहता है, मोरल्स कैसा रहता है. Again, why this is important to understand the will, intellect, morals, emotion? Because whenever the choice comes to you in order to derive or in order to manage the syphilitic case. For example, I am giving the example, you get the symptoms like the death desire, death thoughts of death. There are the patient having thoughts of death, death desire, death conviction of, and death presentiment of. Now all these are giving rise to death. जब हम बोलते हैं कि डेथ सुनते हैं कि बाप रे डेथ, तो हम उसको बोलेंगे कि अरे सिफिलिटिक है. ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेथ डजंट मीन्स इट इज अ सिफिलिटिक. सोच रहा है डेथ के बारे में, सोच रहा है सुसाइड के बारे में, सुसाइड थॉट्स और थिंकिंग अबाउट द सुसाइड डजंट मीन्स इट्स अ सिफिलिस. So there is a types of syphilis and intensity of syphilis is also there is always in the all the parameters. When you say कि death desire, when you say it is a death desire, भाई मरना तो है पर नहीं बाप रे कैसे मरूंगा, अगर पानी में जंप नहीं कर सकता मैं, है ना, ऊपर चढ़ भी नहीं सकता, कुछ हो गया तो मतलब देयर इज इंटरनल इनसिक्योरिटी एंड टिमिडिटी. थॉट है. सम लेडी, द लेडीज हम केस में देखते हैं, लेडीज का थॉट्स रहता है डॉक्टर साहब ऐसा ये हस्बैंड का इतना तकलीफ है कि ऐसा लगता है कि खत्म कर दूं, पर नहीं, डर लगता है, बच्चे के बारे में भी सोचना पड़ता है ना, आगे उनका क्या होगा. So this expression is not a syphilitic expression. When you get the suicidal thought, it's just a thought, but there is no suicidal attempt. But the patient is afraid of going into that suicidal action कि अगर ऊपर से कूदना है या ऐसे ट्रेन के नीचे आना है, सोचता है पर करता नहीं है. This is the timid behavior. So it doesn't comes under the syphilis. It doesn't comes under the syphilis. है ना, suicidal thought और एक्शन ले रहा है. Again, important is the person or female or lady who is threatening, मतलब मैं मर जाऊंगी, मैं ये जहर पी लूंगी, ये कर लूंगी. Sometimes you get the person who taking the sleeping pills, excess amount 4-5 ले लेती, बराबर है कि नहीं, या कोई 2-3 ले लेता है. Or someone you can see the taking the sleeping pills or taking poison or try to take the poison in front of the close person.
जिसमें उसको पता है कि मैं अगर ले रही हूँ तो ये लोग मुझे बचा लेंगे, ये मुझे फटक से हॉस्पिटल में ले जाएंगे. द मोटिव बिहाइंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ द मोटिव इज टू थ्रिएटन द अपोजिट पर्सन, then it is not a syphilitic suicidal attempt. Suicidal attempt without the consequences, या आगे का नहीं, impulsively जो होगा, बस अभी मरना है. So thoughts of death is not a suicide, a syphilis, but even the death desire is not a suicide. Again, it has the parameters. Death conviction of and death presentiment of is at the higher level. तो आपको अगर दो मिले, डेथ डिजायर या डेथ कन्विक्शन या डेथ प्रेजेंटिमेंट, अभी इसमें से चूज करना है. चूज द डेथ कन्विक्शन और डेथ प्रेजेंटिमेंट बिकॉज इट इज अ फ्रैंक सिफिलिस. डेथ डिजायर इज नॉट, राइट. सो देयर इज अ पैरामीटर्स वी हैव टू अंडरस्टैंड. कि हमको लगता है कि सुसाइडल थॉट है तो अरे यार सिफिलिटिक है, पर वो सुसाइड, उसका मोटिव क्या है, दैट इज नीड टू अंडरस्टैंड, राइट. So strength, will. So will can be out of control in syphilis. The strength of will lead us to decide whether person is positive, courageous person or weak, timid person. मतलब strong will है मतलब courageous है. He can face the situation, any situation. Weak will है, timid है तो क्या करेगा? Will कैसे? Weak है. तो he can't able to decide और escape कर लेगा, timid person है. The reaction of the person in situation helps us to decide upon whether the person is courageous है कि coward है. And in general also the reaction the reaction of the person in any situation is actually that person. अगर हमको कि कोई भी पर्सन को समझना है तो हमको डिफरेंट डिफरेंट उसके रिएक्शंस क्या है पर्टिकुलर सिचुएशन में, उसको हमको समझना पड़ता है, ना कि जैसे पर्सन जो बोलेंगे उसको हम उसको रिसीव करना है. But what if the reaction of person is not a constant? That is exactly the case in the syphilis. Changing, the reaction is changing. उसमें भी वो, उसमें भी हम बोलते हैं कि it is a changeable mood or changeable reaction. The reaction to the situation can be too much or out of proportion, or to the stimulus, or to be less, very less, no reaction at all, like indifference, or reaction out of control. Right? The behavior is unpredictable in the syphilis, too much unpredictable or no reaction at all. Extreme में रहता है. That means what is the extreme में रहता है syphilis, है ना? There is no balance or control over the system, giving rise to haphazard, awkward, uncontrolled and unpredictable activity. This leads to ugliness, weirdness, both in mind and body. Right? अभी ये व्हील हो गया, जहाँ पे courage और timidity आपको face, how they face. Intellect to decide, to discriminate what to do and what not to do. Intellectual quality, either destruction or perversion of the intellect or out of control intellect are the syphilitic in origin. Destruction or perversion of the intellect. Now, underactive mind or dull intellect can lead to the stupidity. Dull intellect and a stupid person. It comes under the syphilis. The intellect does not know what is right for him or safe for him, or what is wrong or harmful for him. They can't able to discriminate what is the right, what is the wrong. They are just doing it. So indiscrimination जहाँ पे आता है, it is a syphilitic view. बराबर है. There are the children who stamp as mentally retarded, like is in the Barata, if you see, mentally retarded. They can't able to understand, can't able to decide whether it is right or wrong. Even they doing the things repeatedly, doing the wrong things repeatedly, मतलब doing the things wrong repeatedly. मतलब एक बार अगर गलती हुई है, मतलब एक बार जैसे उंगली वहां गई है ना, प्रेस गर्म है, उंगली गई, जल गया, है ना. The intellectual person, they discriminate
है ना, इंटेलेक्चुअली वो सोचेंगे अरे नहीं यहाँ पे अगर हाथ लगाएंगे तो ये हाथ जल जाता है, बहुत दर्द होता है, दे विल नेवर गो देयर और अवॉइड, बराबर है कि नहीं, डिफेंसिव। बट यहाँ जहाँ पे इंटेलेक्ट ब्लंटेड है तो डूइंग द सेम थिंग्स इन द नेक्स्ट डे वही हाथ लगाएगा, बराबर है कि नहीं। हियर द इंटेलेक्ट इज द blunted, the mentally retarded, we can say. Here the sense of right and wrong is abolished. In the syphilitic, sense of right and what is the right and what is the wrong is totally destroyed. The intellect does not know what is right for him or safe for him or what is wrong or harmful for him. मतलब doing the same thing. अगर कुत्ता के पास गया और कुत्ते ने काटा, अभी वो फिर से there are the different parameters here. अभी कुत्ते के पास फिर से गया, दैट माइट भी हो सकता है कि वो डेफिएंट है, बहुत बहादुर है, but at the contrast you can see the another way he can't able to distinguish कि अभी फिर से मुझे कुत्ता काट सकता है करके। तो राइट एंड रॉन्ग का जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो वेदर इट इज राइट, थिंकिंग लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे वो एबोलिश हो जाता है। द वेरी good example is the anacardium child, you can say, or anacardium remedy. We can think of, we can see the anacardium, how they behave, how how their reactions or behavior reflect. Now, when you see, according to the Dr. Praful Vijayakar sir, this is the trimismatic matramatic of the anacardium. Here you see the second column is the, नहीं यहाँ पे बोलना, the third column is the psychosis and third is the syphilitic. Where you can see the anacardium person is very cruel, very helpless, even the hopeless, very weak memory, even indifferent to torture of others, unsocial, feeble-minded, sense of right and wrong abolished, lost moral feeling, confusion of identity, sadomasochistic, desire or sexual fantasy, not pain or humiliation. Now, there are some pointers that given by the Dr. Praful Vijayakar sir in the anacardium. According to him, when you see a person who is mischievous and there is some form of cruelty in their mischief, which they enjoy, think of anacardium. Mischievous, see again the mischievous, you can say कि mischievous मतलब खोड़कर, पर खोड़कर it doesn't, खोड़कर तो हम उसको ले सकते हैं कि psychosis में, but here the mischievous is not purely a psychosis, it is psychosis to syphilis, because in always there is a, in mischievous there is a, they enjoy कि दूसरे को तकलीफ को उसको वो एंजॉय कर रहा है बच्चा, दूसरे के तकलीफ हो रहा है, जो चिढ़ रहा है उसमें दर्द हो रहा है, दूसरे सफर हो रहा है, फिर इसको मजा आ रहा है, दिस इज द सिफिलिटिक के तरफ जा। हाँ, the when you see the children when who don't learn from their old mistake and keep doing the same things and thereby getting injured, even though they injured by the that the doing the same, doing the things, they doing the same things again and again and again. Here the intellect is abolished and they doesn't know this is the कि ये हमको तकलीफ दे रहा है कर, बराबर। When you see the children who make a mistake where you will get, आपको थॉट आएगा व्हाट द फुल फीलिंग आएगा, एक्ट्स आर नॉट मेडिएटेड बाय यूज ऑफ इंटेलेक्ट, मतलब ये कितना बकवास है या कितना बेवकूफ है, इतना भी नहीं समझता है, बराबर है। सो this is the anacardium expression in the syphilitic point of view, right? Sense of right and wrong is abolished. Even grown-up children who do not know where to spite, where not to, जो बड़े हो गए, where not to spite, where to speak, where not to speak, is comes under the syphilitic miasm.
The body does not realize whether I am hungry, whether I am satisfied and fulfilled, whether is excess salt, whether there is excess salt or spices, or whether there is less of it. Body can't discriminate. This is the intellectual property. Yeah? कि भूख भूख मतलब सेंस ऑफ सोसाइटी भी नहीं समझ रहा है, खा ही रहा है, खा ही रहा है, खा ही रहा है. ये नहीं समझ रहा है कि मीठा है, तीखा है, खा रहा है, मतलब साल्ट है, पर उसको रियलाइज नहीं हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा है. सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर क्वालिटी यहाँ पे एबोलिश हुई. दैट डजंट मीन्स, काफी लोग हम देखते हैं ना, स्पेशली मैरिड पर्सन, स्पेशली मैरिड मेल, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर द मैरिड द प्रैक्टिशनर्स. इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब कोई है ना कि घर में सब्जी बनती है, खाना परोसा जाता है और उसमें नमक कम होता है, फिर भी हम हस्बैंड लोग बोलते नहीं है कि खाना कम है. उसको पता है कि अगर वो बोलेंगे कि खाना कम मतलब नमक कम है या मिर्ची कम है तो क्या होगा आगे. समझ गए कि नहीं. तो दैट डजंट मीन्स कि वो इंटेलेक्चुअली ब्लंटेड है. बराबर, दैट इज द डिफरेंट सिनेरियो. बट हियर व्हाट यू seen here is the difference. And they intellectually they don't able to understand or realize or discriminate the things. बराबर है कि नहीं. So this is the syphilitic. और psychosis. If the person or man or married person मतलब वो एडजस्ट कर रहा है, हाँ नहीं ठीक है हमको पता है, तो वो मैनिपुलेट कर रहा है कि अगर मैं बोलूंगा वाइफ को तो वाइफ का रिएक्शन ऐसा होगा या कुछ होगा, तो हम उसको ये नहीं कर पाएंगे आगे का, है ना. तो माइट बी देयर इज अ टिमिड नेचर, माइट बी देयर इज अ कॉन्सिक्वेंसेस, क्या है उससे डर लग रहा है ना. सो दिस इज द डिफरेंट, दिस इज कम्स अंडर द इमोशंस, राइट. दिस इज कम्स अंडर द मैनिपुलेशन. Now the will, intellect, morals is again important. Sense of morals means right and wrong. ये right है, ये wrong है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए. ये इसका जो सेंस बहुत ज्यादा रहता है. तो यहाँ पे एनाकार्डियम में बोलो या यहाँ पे सिफिलिटिक में मोरल्स भी ब्लंट हो जाते हैं, एबोलिश हो जाते हैं. बराबर है ना. दिस एबोलिश सेंस मेक्स हिम क्रूएल. अभी मोरल्स एबोलिश हो जाए तो क्या हो जाता है कि वो ज्यादा क्रूएल बन जाते हैं. They do the immoral acts and many times make him go in for drugs, or becomes they such a type of person becomes criminal, but criminal without remorse. Try to understand, this is very important. क्रिमिनल है या गलत काम चीजें कर रहा है, हमने साइकोसिस पे देखे ना, गलत चीजें कर रहा है. द बॉस हैविंग द अफेयर विथ हिज सेक्रेटरी, बट एट द सेम टाइम क्या होता है, उसको एक डर भी बना रहता है कि कोई देखेगा, किसी को पता चलेगा, या अगर सेक्रेटरी ने बोल दिया है कि मुझसे शादी करो, तो ये जो फियर फैक्टर है वो रहेगा. पर डूइंग द थिंग्स विदाउट रिग्रेट, विदाउट एनी रिमोर्स, कोई भी देखे कुछ भी हो मुझे, they don't bother about, not aware, it's a bother about it. That means this innate characteristics makes him openly lascivious. Agar they are not bothered, there is no remorse, there is no regret whatever they are doing. There is no defense which shows the psychosis, like उसमें कैसे पसीना आता है, बॉडी ठंडी पड़ती है ना, घबराहट होती है, क्या होगा, कुछ गलत तो नहीं होगा, लाइक. तो साइकोसिस टेंट वहां पे रहता है, यहाँ पे नहीं है. Openly become lascivious, they become livid and behave like obscenely in public. That's why the people who behave obscenely in public, they show their nudity, they are the frankly syphilitic. He can become shameless to such an extent that he removes his cloth and exhibit nudity like a syphilitic hyocemus. So there is a amorousness which is sexual in nature, which is called as the very romantic feeling. There is a lasciviousness which is amorous is soric, lascivious is psychotic, where there is a sexual thought and try to satisfy or gratify that sexual thoughts by any means. But the tertiary is, or the third is the syphilitic, where the person becomes lavid or person becomes shameless. This is the syphilitic.
symptoms, right? How the person transfer, है ना, from amorous to lascivious to lavidness to nudity to the shamelessness, right? As long as the psychosis prevail, there is a fear of criticism, fear of punishment, fear of loss of prestige, which cause control over the lasciviousness or lavidness, which can be indirect and clandestine. But in syphilis, there is no control. Control or bar is out of bar हो जाता है. There is no control at all. So there is a no holds barred sex campaign is purely syphilitic. ये जो थॉट प्रोसेस है ना, कोई देखेगा पोजीशन क्या होंगी, लोग सोशली कैसे होगा, है ना, तो दिस प्रिवेंट फ्रॉम गोज इनटू द सिफिलिटिक. तो क्योंकि पेशेंट साइकोसिस में, हियर जब सिफिलिटिक में चले जाएंगे, यहाँ मोरल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एबोलिश हो जाएंगे, तो उसको कोई डर नहीं रहेगा, कोई प्रेस्टीज का डर नहीं रहेगा, आगे लोग क्या बोलेंगे उसका कुछ थॉट या थिंकिंग नहीं रहेगा, राइट? दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ सिफिलिस, राइट? The uncontrolled emotion are the syphilitic. I already explained, like anger, like anguish, like rage, fury. Emotion are essentially a defense mechanism for an individual. People who are weak have timid traits so that they don't involve themselves in fight or harmful situation. Now, for example, anxiety is the emotion to protect. That means sora. Anxiety है ना, कि anxiety health about, है ना, तो अगर मैं ये ऐसा ज्यादा अगर पिज्जा खाऊंगा ज्यादा, ये तो बाबा ये तकलीफ हो सकती है, ये हो सकता है तकलीफ हो सकती है, तो दे ट्राई टू अवॉइड इट, बराबर है ये. बट द कोवर्ड माइंड डेवलप फियर एंड एस्केपिस्ट एटीट्यूड एज देयर डिफेंसिव ट्रेट. दैट मींस द साइकोसिस क्या करेगा, they develop the fear and they escape from it. The fear of dog, the fear of snake, the fear of any fear of danger, something. So they escape from the situation. अंधेरा दिख रहा है, वहां से पलट जाएंगे. कुत्ते है या कोई एनिमल्स है जो जो डेंजरस है या हानि पहुंचा सकते हैं, तो उससे एस्केपिज्म एक डिफेंस यूज करेगा. दिस इज कम्स अंडर द साइकोसिस. एंड इन सिफिलिस द डिफेंस ऑफ इमोशन आर आउट ऑफ कंट्रोल. Defense of emotions are out of control in syphilis. That means इमोशंस के कंट्रोल में होने, इमोशंस को कंट्रोल करना है. हम बोलते हैं ना कि दारू पीना ठीक है, आप दारू पी रहे हो या ड्रिंक कर रहे हो या अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, दैट इज द राइट. बट द प्रॉब्लम इज व्हेन अल्कोहल आपको पी रहा है, बराबर है, व्हेन द कंट्रोल ओवर कंजम्पशन इज लॉस and there is an uncontrolled consumption and the person can't able to live, can't able to perform without that, without the consumption of alcohol, then हम बोलते हैं कि दारू उसको अभी पीने लगी है. वो दारू नहीं पी रहा है, दारू उसको पीने लगी, because they lost the control over it, himself, senses himself. मतलब हम स्टेयरिंग तो घुमा रहे हैं, तो चक्के, अगर कार हम चला रहे हैं, स्टेयरिंग घुमा रहे हैं, तो इधर स्टेयरिंग तो व्हील्स इधर जाएंगे, इधर घुमाएंगे इधर, पर यहाँ पे कंट्रोल ही नहीं है, कंट्रोल लॉस हो रहा है. बराबर, व्हील स्टेयरिंग तो घुमा रहा है पर व्हील अपने मर्जी से आगे पीछे कहीं पे भी घूम रहा है. देयर इज नो डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू व्हाट वी आर गिविंग द ऑर्डर. दैट मीन्स दे आर going haywire, the car going haywire, the car going out of control. तो इसमें क्या होगा, इसमें तो डिस्ट्रक्शन ही होगा ना, एक्सीडेंट होगा, लोग मरेंगे. So this is the destruction, it is out of control. So in syphilis, है ना, समझिए, in syphilis the man is not in a control out of his emotion, but emotion control him. Man is not in the control of emotion, but emotion control him. बराबर है. मतलब बोला है ना, एक पेशेंट अगर बोलता है कि गुस्सा आता है तो मैं अपना आपा खो देता हूं, मैं क्या बोलूंगा क्या करूंगा मुझे ही नहीं पता रहा. बराबर है कि गुस्सा आता है डॉक्टर साहब पर, थोड़ी देर के लिए आता है चले जाता है, नॉट रिमेन्स, है ना. गुस्सा आता है पर बहुत गुस्सा आता है, ऐसे करूँ क्या नहीं, पर नहीं करता हूँ, डर लगता है. गुस्सा रिमेन्स फॉर लॉन्ग टाइम, गुस्सा बिकम्स सप्रेस, एंगर रिमेन्स फॉर लॉन्ग टाइम, है ना. तो ये साइकोसिस सोरा एंड सिफिलिस.
Crime. Most of the criminals who kill, murder with or without remorse are made up of the syphilitic constitution. यहाँ पे रिमोर्स नहीं है, रिग्रेट नहीं है ना? आप मूवी देखते होंगे, try to correlate the movie's incidents, movie's character to the remedy or to the MIASM. आप जो भी कर रहे हो, जो भी देख रहे हो, मूवीज देख रहे हो, पर्सन को देख रहे हो, डिसीज समझ रहे हो, ट्राई टू कोरिलेट इट विद रिस्पेक्ट ऑफ द MIASM. उसको MIASM से कोरिलेट करो. एवरीथिंग वी कैन कोरिलेट विद द MIASM. बराबर है कि? फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन डूइंग द हेल्पिंग द पुअर पीपल, बराबर है कि? लोग मदद कर रहे हैं, कुछ लोग है मदद करते, किसी को दूसरे को पता भी नहीं चलता कि भाई ये बंदे ने मदद किया है. पर कुछ लोग थोड़ा मदद करते हैं और फोटो निकालते हैं और व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे फोकस कर देते हैं, शेयर कर देते हैं. मदद कर रहे हैं पर क्या कर रहे हैं? व्हाट इज द मोटिव? सी, द मोटिव बिहाइंड द बोथ द पीपल्स इज डिफरेंट. वन इज द सोरिक मोटिव एंड सेकंड इज द साइकोटिक. द माइंड इज द सोरिक वन, प्राइमरी, एंड सेकंड माइंड इज द साइकोसिस. वो शो करना चाहता हो कि मैं कितना दानी पुण्य. वो शो करना चाहता हो कि मैंने बस दूसरे को मदद किया है. 4 लोगों को, 10 लोगों को बताना चाहता है. इट इज नॉट सेल्फलेस, इट इज द सेल्फिश मोटो. तो जहां पे सेल्फिश मोटो आ रहा है ना, साइकोसिस. बराबर है. सो criminals are the syphilitic where when there is a no remorse. बराबर है. In the same way we can see the syphilitic cause. ये भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जैसे शायद डॉक्टर मोनिका ने केस बताया था, where there is a mortification was the leading mental cause that arrive. बराबर है. So mortification, humiliation, है ना? If you understand the mortification, it is the frank syphilis. Mortify, it is like a bus. अगर किसी ने scold in front of या humiliate या कोई ऐसा blame किया है, तो उसको लग रहा है बस अभी खत्म हो गया हूँ, ये सेल्फ रिस्पेक्ट पूरा मेरा चले गया, अभी मैं जिंदा रहने के लायक. So this is the way the person perceive that situation. That is more important. How he or she perceive. The same situation है, पर दूसरा बोलेगा यार ठीक है ना, डाटा तो डाटा बोल दिया, 4 लोग हैं, मैं भी उसको देख लूंगा, मैं भी देख लूंगा. मतलब ये रिवेंजिंग है, ये दूसरा है, ये साइकोसिस. बराबर है. कोई किसी को डांट दिया, जोर से चिल्ला दिया, घर में जाके एकदम से मेंटल डिप्रेशन में चले गया. कोई है कि इतना एंगर एंगर एंगर, सल्सर्स डेवलप हो गए. तो हाउ द बॉडी एक्सप्रेसेस इज मोर इम्पोर्टेंट. हाउ दैट पर्सन परसीव दैट सिचुएशन, perceive that incident, that is more important to understand the person, to understand the situation. Now that perception, we can turns that perception or convert that perception into the rubric, or even to sometimes into the delusion form. Right? So honor wounded, fright, panic, sudden loss of loved one, sudden loss of loved one, grief, which is out of proportion. Grief होगा out of proportion. Sudden loss of business, sudden loss of money, prestige, all comes under the syphilitic cause. This denote the syphilitic sensitivity. बराबर है, हम बोलते हैं ना syphilitic sensitivity. तो syphilitic sensitivity हमको अंडरस्टैंड करना है syphilitic डिसीज में. आप सोरिक सेंसिटिविटी को समझेंगे या सोरिक कॉज को पकड़ेंगे इन ऑर्डर टू ट्रीट द सिफिलिटिक डिसीज, देन patient will not come out of that state. You have to select that rubric or that symptoms which belongs to a higher एक, है ना? higher मतलब will, है ना? will, then intellect, then morals, then emotions, like that. फिर आता है, फिर रिजर्व है, इंट्रोवर्टेड है, लाइक दैट, है ना? वैसे ड्रीम्स भी वैसे सिफिलिटिक हो सकते हैं ना?
आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि हम हर इसमें माइजम को अप्लाई कर सकते हैं। पर्सन कैसा बात कर रहा है, कैसे बैठ रहा है, क्या डिसीज है, हर इसमें माइजम को अप्लाई कर सकते हैं। तो ड्रीम्स ऑफ एक्सीडेंट वेयर देयर इज अ क्रैश, देयर इज अ डिस्ट्रक्शन, मर्डर, एक्सप्लोजन, है ना, that dreams comes under the syphilis. Destructive dreams, perverted dreams, जो perverted है, perverted sexual dreams आ रहा है कि जहाँ पे पर्सन को ये दिख रहा है कि they are doing the sexual act with the animals. These are the perverted dreams. Women's married to many and है ना, these are the perverted dreams. Even the clairvoyant dreams are the syphilitic. Try to understand clairvoyance. जो आगे होने वाला है उसको अगर देख रहा है, दिस इज द क्लेयरवाइंट थॉट्स और क्लेयरवाइंस जो है, दिस इज सिफिलिटिक एक्सप्रेशन, राइट। व्हेन वी अंडरस्टैंड दिस, ये सिफिलिटिक की फीचर्स। सो दिस इज द सिफिलिस, बट हाउ वी प्रोब द सिफिलिटिक सिम्टम्स और रूब्रिक, हाउ वी अंडरस्टैंड और हाउ वी प्रोब इनटू द पेशेंट। अभी उसको समझना पड़ेगा कि ये सिफिलिटिक कब हम उसको बोलेंगे, सिफिलिटिक को समझना पड़ेगा ना, माइजम को समझना पड़ेगा। तो इन व्हाट वे वी कॉल्ड इट एज अ सिफिलिटिक एक्सप्रेशन, it is already we explain, but another way we can explain this, probing the syphilitic symptoms or rubrics through the, when the rubric or symptoms you get the distortion, you get the perversion, you get the out of control feeling, you get the exaggeration, excessively exaggeration, and in extreme excessively loose or shallow is again the syphilis. Weird, strange symptom, unbalanced, unnatural and abnormal symptoms, abnormal mind, perverted mind, all these are comes under syphilitic expression. Now the types of syphilis, मैंने बोला ना कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम है। सिफिलिस है पर कौन सा ज्यादा आगे, कभी साइकोसिफिलिस भी हो सकता है, सोरासिफिलिस भी हो सकता है, फ्रैंक सिफिलिस भी हो सकता है। टेक दिस, इसका आप लिख लीजिए या टेक इट एज अ स्क्रीनशॉट लीजिए, दिस स्लाइड, ये स्लाइड का, दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड और टू सॉल्व द सिफिलिटिक कंडीशंस, सिफिलिटिक डिसीजेस. Now the types of syphilis in the form of exaggeration, exaggerated syphilis, जहाँ पे intensity एकदम exaggeration होता है, anxiety exaggerated, anguish, anxiety exaggerated, anguish, sorasyphilis or syphilis, sorasyphilis बोले. Distortion of shape or boundaries, distortion of face, distortion of shape and boundaries. Distorted ulcer, distorted ulcer, it is a psychosyphilis, not a frank syphilis. ये भी समझना है. Even some mental rubrics are psychosyphilitic. Even most of the people call the delusion as a syphilis. Not every delusion is a syphilitic. Delusion can be psychosyphilitic or syphilitic. Even not the delusion is a psychotic. Few people call the delusion as a psychotic, comes under the psychotic bias. They called it as a psychosis, delusion. Because the delusion is the wrong perception of the thoughts, distortion of thought. Delusion is a distortion of the thought. That's why it is come under the psychosyphilis or syphilis. है ना? The perversion, है ना, कौन से psychosyphilitic delusion है या कौन से rubric है या कौन से syphilitic, हम आगे के सेशन में लेंगे. That will definitely we will take it so that you can understand the exact nature of the rubric. Perversion, जहाँ पे morals blunted है, morals abolish हो गए, there is no morals, where you get the perversion. It is a frank syphilis. It is a frank syphilis. Hysterical reaction. Reaction is out of control. Hysteria. It is a frank syphilis. Destruction, where you get the destruction at the organ level, system level, parts level, all destruction of the mind, or when the mind gets out of control. It is a frank syphilis. So, destruction of structure or destruction of control is the frank syphilis. The autoimmunity, where there is a self-destruction, when the gun pointed towards self, this is also frank syphilis. And that last, at the highest level, the genetic mutation.
like a cancer, where you get the physical level, you get the genetic mutation. It is also, it is a frank syphilis, genetic mutation. So these are the types of syphilis. है ना? Syphilis can be sora-psychotic syphilis, sora-syphilis, syphilis can be psychosyphilitic, and syphilis can be frank syphilis. So this is very important. बराबर है कि नहीं? Is it clear? अभी इसका पेस और डिसीज प्रोग्रेस कैसा होता है, क्या होता है सोरिक डिसीज में? सोरिक डिसीज आर मोस्टली अ फंक्शनल डिसीज रहता है, where the biochemistry changes like APD, एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर, जहाँ पे एसिड सिक्रीशन बढ़ जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है ना, टेम्पररी सूजन, रेडनेस, ये सब आता है. दे आर इवन फास्ट प्रोग्रेसिंग और इवन द स्लो प्रोग्रेसिंग. Intensity may be severe or moderate. The vitality is good and dynamization is good. That's why you get the ample of symptoms. You get the ample of symptoms in the psoriatic disease. You get the characteristic symptom in the psoriatic disease in order to prescribe. But in contrast, if you see psychosis, where the psychosis enter through window or deceitful miasm, that's why it is called as a deceitful. साइकोसिस को हैंडल करते वक्त या साइकोटिक सिम्टम्स को भी या माइंड को भी हैंडल करते वक्त हमको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, बिकॉज द साइकोसिस इज कॉल्ड एज डिसीटफुल माइजम बिकॉज दे एंटर थ्रू विंडो. जैसे सोरा आगे से डोर से आता है ना, जिसमें डोर से आता है मतलब हाउ वी इंटरप्रेट, जो डोर से आता है तो सब फैमिली मेंबर को पता रहता है या सबको पता है कि ये बंदा आया है, घर में आया है, घर में एंट्री हुई, पर्सन आया है. पर जो लोग खिड़की से आते हैं मतलब कौन रहते हैं, चोर रहते हैं, और छुप के आते हैं. द फैमिली मेंबर डोंट नो, डजंट अवेयर अबाउट, फैमिली मेंबर डजंट अवेयर अबाउट द दैट कि ये थिंग या ये चीज या ये सिम्टम या डिसीज घर में एंट्री किया है या बॉडी में एंट्री किया है. समझ गए कि नहीं? मतलब डायबिटीज डेवलप हो गया है, हाइपरटेंशन डेवलप हो गया है, अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ सीवियर बीपी एकदम से बढ़ेगा नहीं, या कुछ ऐसे अल्टीमेटम एकदम हो जाएगा कि कार्डियो मेगाली हो जाएगा या क्लॉट जमा हो जाएगा या बर्स्ट हो जाएगा, हिमोरेज डेवलप हो जाएगा, हाइपरटेंशन से इतना प्रेशर बढ़ेगा, तब सिफिलिटिक एक्सप्रेशन आ जाते हैं डायरेक्ट. है ना? हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन है, बीपी बढ़ा हुआ पर्सन को पता ही नहीं है. कब पता चलता है? जब सिफिलिटिक एक्सप्रेशंस होते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द डिसीटफुल माइजम बिकॉज इट एंटर्स थ्रू द विंडो. इसलिए इसको काफी चतुरता से हैंडल करना. वेयर द कंडीशन इज स्लो और फास्ट, वेयर द कंडीशन इज स्लो, मोस्टली स्लो, बट द इंडिकेशन आर लेस. यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम बहुत ज्यादा नहीं होते. दैट्स व्हाई समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू हैंडल. स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑफ ग्रोथ और थिकनिंग और एक्युमुलेशन, structural changes of growth or thickening or accumulation, you get such a type of pathology. And already said the disease deceitful condition. है ना? कॉल करना वारंवार कॉल तिकडनं करा प्लॅटिनम. बराबर है कि नहीं? सो ऐसा, हाँ सॉरी, साइकोसिस हो गया, एंटर थ्रू द विंडो. अभी सिफिलिटिक डिसीज, इट इज ओपन फायर, एकदम भड़ा के साथ, मतलब ये भी डोर से ही आएगा, जैसे सोरा डोर से आता है ना, ये छुप के नहीं आएगा, बट इट इज ओपन फायर. एकदम से देखो, एकदम से सब घबरा जाएंगे, ऐसा सब घबरा जाएंगे. इट इज द एंट्री इज लाइक दिस, सब बॉडी एकदम डिस्टर्ब हो जाएगी ऐसा. देर इज अ रैपिड प्रोग्रेस एंड डिटोरेशन एंड डिस्ट्रक्शन. द रैपिडिटी इज important. Lot of activity and dynamization you can see in that syphilitic diseases. There is a disorder, there is unpredictableness, and there is a defiant. बराबर है. So this comes under the, this is a syphilitic open fire, called it as open fire. So we completed here the all three miasm, right? We completed here the all three miasm. The sora कैसा है ना? सोरा के एक्सप्रेशंस कैसे थे, साइकोसिस कैसे, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, एंड इवन वी see the and discuss the syphilitic miasm at the physical level, at the mental level. बराबर है कि नहीं? So that now you must be in the position
to categorize the all thing at the physical level means disease level, and at the mental level means mental symptoms, yeah, mental rubric, to categorize it into the miasmatic way. Or you can be in a position to draw the totality miasmatically. Most of time, yeah, हम क्या करते हैं, totality बनाते हैं, but that totality is not under the consideration with the miasm. You have to now draw the miasmatic totality. This is new concept you have to understand. Not new, it is विजयकर सर concept. पर जो लोग नहीं या नए हैं इसमें, या जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, this is the, you have to understand the miasmatic totality. When it is possible, when we list down all the symptoms, first we have to analyze whether common है, uncommon है, characteristic, peculiar, ये फिर उसको miasmatically उसको ये करो, सोरिक सिम्टम कौन सा है, साइकोटिक कौन सा है, सिफिलिटिक कौन सा है. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब केस में रूब्रिक्स लेते हैं या सिम्टम्स लेते हैं टोटलिटी में, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अ साइकोटिक ही होते हैं. हम सिफिलिटिक डिसीज को सॉल्व करते हैं, करने की कोशिश करते हैं और लेते हैं साइकोटिक सिम्टम. हम सेंसिटिविटी को नहीं समझते केस. दैट्स व्हाई वी फॉल इनटू द lacking in understanding or solving or managing the higher cases like a syphilitic cases or psychosyphilitic cases or even the psychotic cases. बराबर है कि नहीं? That's why in every case try to understand क्या करना है हमको. in every case में ये जनरल है, try to understand it, listen it carefully. In every case we have to understand the disease, we have to understand the physical process. The knowledge of disease at the physical level and at the mental level, that needs to be understand first. So the disease knowledge so that we can identify the miasm. Disease समझेगा तो miasm समझेगा ना. हम डिसीज ही नहीं समझेंगे, हम उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, हम पूछ ही नहीं रहे क्या सिम्टम है, हम पैथोलॉजी को नहीं समझ रहे, हम इन्वेस्टिगेशन को वेटेज नहीं दे रहे और हम डायरेक्टली एंट्री कर रहे हैं, then it is a hazardous, it is dangerous. When you identify the miasm, then enumerate all the symptom, है ना, सब सिम्टम दें, फिर वो सिम्टम को क्लासिफाई करो माइस्मेटिकली और माइस्मेटिक टोटलिटी डिराइव करो. This is the way to deal with the each and every case. सोरिक रहो, सोरा सिफिलिटिक रहो, साइकोटिक रहो या सिफिलिटिक रहो. और हमको कॉमन सिम्टम्स पे नहीं प्रिस्क्राइब करना है. कॉमन सिम्टम जो होते हैं ना, दैट मीन्स इफेक्ट. इफेक्ट मीन्स कॉमन सिम्टम, साइन एंड सिम्टम, रेडनेस दिख रहा है, पेन दिख रहा है, ऑल दीज आर द इफेक्ट. दीज आर फॉर द फॉलो अप एंड नॉट फॉर द टोटलिटी. We have to choose the symptom of the defense, that means symptoms of miasm, and not the symptoms of effect. We have to choose and we have to understand the symptoms of defense and not the symptoms of effect. Symptoms of defense means miasm. बराबर. अगेन दिस की कौन से केस में कैसे अप्रोच लेना, ये बाद में भी बता सकता हूँ, बट द स्लाइड इज हियर. Try to understand this or we can discuss it in the later ये सेशंस. एक्यूट केस में कैसे अप्रोच लेना, सोरा सिफिलिटिक कैसे अप्रोच लेना. सोरा सिफिलिटिक हमने देखा है ना, इट इज एग्जैगरेशन, एंजाइटी, एंग्विश, है ना. तो एग्जैगरेटेड सिम्टम हमको इसमें सर्च करना पड़ता है सोरा सिफिलिस में. देन कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर या चेंज डिस्पोजिशन, मेंटल स्टेट समझना पड़ता है. डिस्पोजिशन को नहीं इसको ये करना है, डिस्पोजिशन यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है. सोरा सिफिलिस में एलिमेंट्स फ्रॉम कर सकते हैं, थर्मल थर्स्ट भी कर सकते हैं, बट डिस्पोजिशन नहीं. चेंज डिस्पोजिशन, दैट मींस मेंटल स्टेट, बराबर है कि. सोरा साइकोसिस और सोरा सिफिलिस, सिफिलिटिक रूब्रिक से यहाँ पे कंसीडर करना है. पेस ऑफ डिसीज यहाँ साइकोसिस, व्हेन वी आर डीलिंग विद द साइकोसिस, यहाँ पे डिस्पोजिशन इंपॉर्टेंट है. अभी डीलिंग विद साइकोसिस में डीलिंग विद द साइकोटिक डिसीज कंडीशन और साइकोटिक डिसीज. Here the disposition is important, here the sensitivity of the person is important, thermal important, thirst important, and the characteristic particular if any, that is again the important. और साइकोसिफिलिस में
slowly progressing रहता है towards the destruction. That's why cause is not important in psychosyphilis. सोरासिफिलिस में cause important है और acute में cause important है. That means सोरा में, है ना, psychosyphilis में नहीं. So slowly progressing toward destruction. That's why cause is not important. Find the syphilitic rubric at the mental level, or you can find the syphilitic rubric at the general level too. Then disposition and sensitivity, thermal thrust. Here also the disposition is important even in the psychosyphilitic. If you are dealing with the diabetes, with the diabetic ulcer, diabetic food, this is the psychosyphilitic condition. That is psychosis going to syphilis. और इन सिफिलिस में क्या सब स्टेट लेना पड़ता है, सिफिलिटिक ही लेना पड़ता है, उसमें कोई साइकोसिस नहीं है. और सेंसिटिविटी भी लेना है सिफिलिस में तो सिफिलिटिक सेंसिटिविटी लेना पड़ता है. इफ द कॉज इज देयर इट मस्ट बी अ सिफिलिटिक, राइट. सो दिस इज द syphilis. So if anyone in the flow of this journey of the miasm, from the start, I think they can easily understood the things properly and easily. But अगर एक दो ही सेशन किया होगा या लास्ट का ही किया होगा, फर्स्ट नहीं किया होंगे, फर्स्ट टू सेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सेलुलर मार्फोलॉजी, है ना, सेल्स, और कैसे हमने उसको माइजम को सेल्स के साथ या सेलुलर पैथोलॉजी से कनेक्ट किया है ना. सो आफ्टर दिस नाउ द practical part, practical in the sense this is your job now and I am giving you the assignment. एक चार्ट दूंगा जिसमें फिजिकल डिसीज रहेंगे, बॉडी डिसीज एंड मेंटल सिम्टम्स रहेंगे. यू हैव टू क्लासिफाई दैट सिम्टम्स और डिसीज इनटू द सोरा साइकोटिक और सिफिलिटिक. आपको चार्ट बनाना है, सोरा साइकोटिक या फिर सोरा के पहले साइकोसिस सिफिलिटिक. दिस इज द होमवर्क बोलो, असाइनमेंट बोलो, एंड यू हैव टू सबमिट इट विद इन द वीक, है ना. एंड you can share over the group, or if you don't want to share on the group तो आप पर्सनली भी मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, so that we will discuss in the session and we come to the proper understanding. But unless and until you try it, है ना, ट्राई करो, थिंक करो, सोचो, डोंट प्लेनली उसको कैटेगराइज करो. ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैथोफिजियोलॉजी. पढ़ो, फिजियोलॉजी पढ़ो या पैथोलॉजी पढ़ो, पैथोलॉजी का बुक ओपन करो. स्ट्रक्चरल क्या चेंज हो रहा है, क्या डायलेटेशन हुआ है, रिलैक्सेशन हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है, इंड्यूरेशन हुआ है. अंडरस्टैंड दैट पैथोलॉजी एंड देन कैटेगराइज द डिसीज इनटू द सर्टेन माइजम. ये जब पहला स्टेप्स है, ये पहला इंपॉर्टेंट. फिर हम देखेंगे कि फिर ये माइजम है तो कैसे अप्रोच लेंगे, जो लास्ट स्लाइड में बताया उसको, और फिर से हम लेंगे. सो आई थिंक इट इज सफिशिएंट. इट्स 4:45 15 minutes हम आगे, more time is there. Is it okay? Is there any query you can share, or you can even share to the group? I will try to explain it, but there is a time foundation, है ना, तो तुरंत करना कभी कभी संभव नहीं होता है because of the patient cases या patient. See, general syphilis, it is not general, it is a physical general or the मेंटल जनरल. जनरल्स में हम कैसे डिवाइड करते हैं, फिजिकल जनरल. फिजिकल जनरल मतलब कैसे, फिजिकल बॉडी, द रिलेटेड टू फिजिकल बॉडी, एंड मेंटल जनरल रिलेटेड टू माइंड. बराबर है. अभी जनरल सिफिलिस मतलब भी एक आ सकता है, ये टेंडेंसी होती है. बराबर है. टेंडेंसी फॉर अल्सरेशन. बराबर है. टेंडेंसी फॉर अल्सरेशन, you called it as a general syphilis.
बराबर, अगर आप उस तरह से पूछ रहे हो। सो लाइक दैट यू कैन कॉल जनरल वेयर देर इज अ, अभी अल्सर एक ही जगह पे है, डायबिटिक फुट है तो फुट पे है ना, पर टेंडेंसी कुछ भी वुंड हुआ तो अल्सरेशन हो जाता है, दिस इज अ जनरल, है ना। पैथोलॉजिकल जनरल भी हम बोलते हैं। हम देखते हैं कि कोई भी कभी भी हम जब केस लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स हैव द हैबिट टू टेक द कॉमन सिम्टम्स और डिसीज रूब्रिक, कॉमन रूब्रिक भी लेते हैं, डिसीज रूब्रिक लेते हैं, कैंसर ले लेते हैं, बराबर, फॉर एग्जाम्पल। बट वी आर नॉट डूइंग लाइक दैट, वी नेवर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स, इवन विजयकर सर ने या हनीमन सर ने बताया कि हमको डिसीज सिम्टम या रूब्रिक नहीं लेना है, हमको पैथोलॉजी या जनरल पैथोलॉजिकल रूब्रिक लेना है, general pathological rubric. Now the if the cancer having the ulcer or proliferative growth, so don't take the cancer of mouth and take the ulcer, syphilitic ulcer. It is a general, हम उसको generalities generalize कर रहे हैं, है ना, उसको हमको particular symptoms नहीं लेना है ना, general symptom, तो we can call this as a general syphilis, right? So thank you very much, and I hope this will definitely give the benefit in your practice, and the journey is not the finish. There are a lot of things we have to learn after this सोरा साइकोसिस सिफिलिस, है ना। हम पहले ये माइजमेटिक क्लासिफिकेशन में जाएंगे, डिसीज और फिजिकल और मेंटल में, और फिर हम जाएंगे ट्राइमाइजमेटिक मेट्रामेटिक का, कि एक रेमेडी को ट्राइमाइजमेटिक कैसे करते, सोरिक कैसे निकालना, साइकोटिक और सिफिलिटिक, बराबर है। सो थैंक यू वेरी मच।